Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss the histology of the bone tissue, osseous tissue. So, like different other types of connective tissues we have discussed earlier, bone tissue or the osseous tissue also consists of cells and the intercellular matrix or substance. Now, what is the special thing regarding the matrix of the bone tissue? That it is having the special property of being rigid. The rigidity of the bony tissue is because of the mineral salts, mainly calcium phosphate, which is impregnated in the tissue, bony tissue, in between the lamellae of the bone. So the chief physical property जो है bony tissue की is its toughness and its hardness. The toughness and hardness of the bone tissue makes it special tissue. So now we'll discuss the features and details. So two things that should be kept in mind कि components जो हैं bony tissue के वो दो हैं, cells number one and number two is the intercellular substance or matrix. अच्छा matrix जो है वो in turn is then formed by the ground substance and the collagen fibers. ठीक है, bone जो matrix है it is formed by organic and inorganic component. तो ये आगे इसको हम describe करेंगे. So first thing is the cells, bone cells. Now we have four different type of bone cells. You can see the four different type of bone cells over here. They are drawn in the figure. Osteocyte, osteoblast, osteogenesis cells and osteoclasts. Osteocyte जो है एक mature bone cell है, ठीक है. We'll just briefly go through this क्योंकि this is not related to our histology slides. लेकिन these cells they can be seen in the electron microscope. लेकिन हम इनको यहाँ पे briefly describe करेंगे because this is related to your text. तो ऑस्टियोसाइट जो है मेच्योर बोन टिश्यू में, एडल्ट बोन टिश्यू में जो कि फॉर्म हो चुका है उसमें हमें नजर आता है विच इज प्रेजेंट इमर्स्ड बिटवीन द बोनी लेयर्स. ठीक है, तो ये मेच्योर बोन सेल है. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ऑस्टियोसाइट? द मेच्योर बोन सेल हैज अ शेप ऑफ अ फ्लैट आलमंड लाइक या स्पिंडल लाइक शेप. ठीक है, इसकी जो शेप है वो फ्लैटेंड होगी, स्पिंडल लाइक होगी. द न्यूक्लियस इज present flattened and it's present in the center. Okay, it is darkly stained, and what you can see is some processes originating from the osteocyte. They have finger-like processes arising from the body of the osteocyte. ये processes इसका main feature है, ठीक है. So osteocytes they lie within small cavities which are called lacunae in the bone matrix. ये यहाँ से बोन के टिश्यू से एग्जाम्पल लिया गया, तो इसमें हमें बोन सेल मिला है. ये बोन सेल स्पिंडल शेप्ड होगा, इसमें प्रोसेस ऑस्टियोसाइट के प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे, और ये जो ऑस्टियोसाइट है वो बोनी कैविटी में रेस्ट करेंगे जिनको हम लेक्यूनी कहते हैं. Right now, these finger-like processes they extend into the bony tissue and will interdigitate with the processes of the other cells, and these form gap junctions with the cells of the other tissue. Bony cells, other bony cells. Now, osteoblast. Osteocyte का जो origin है, they are derived from the osteoblast. Osteocytes are derived from osteoblasts. Now, these osteoblasts, when they secrete, what is the function of osteoblast? Osteo means bone, blast means formation. These are the cells which are related to the formation of bony tissue. ठीक है, तो ये bone forming cells हैं. अच्छा, इनके दो main functions हैं. One is to form the organic component of the matrix. अच्छा, organic component क्या है? Collagen फाइबर को सिक्रीट करना, और कोलेजन फाइबर की सिक्रीशन से जो बोन टिश्यू फॉर्म होता है, जो कि जाहिर सी बात है कोलेजन फाइबर सिर्फ डिपॉजिट हुआ है अभी, तो दिस बोनी टिश्यू व्हिच इज फर्स्ट डिपॉजिटेड इज कॉल्ड ऑस्टियोइड. व्हाई इट इज कॉल्ड ऑस्टियोइड? बिकॉज येट इट इज नॉट मिनरलाइज्ड, अभी इसमें मिनरलाइजेशन नहीं हुई. सो द फर्स्ट स्टेप इज द सिक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोनी मैट्रिक्स.
Then this osteoblast secrete an enzyme which is called alkaline phosphatase. This alkaline phosphatase enzyme is responsible for the mineralization of the bony tissue. जो बोन का मिनरल कंटेंट है वो फिर वो एंजाइम सिक्रीट करता है एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स मिनरलाइज्ड एंड फॉर्म अ मैच्योर बोन टिश्यू. तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है इस तरह से बोनी टिश्यू डिपॉजिट करता है. फर्स्ट इट डिपॉजिट्स एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन, देन इट मेक्स इट मिनरलाइज बाय सिक्रीशन ऑफ एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ये देखिए ऑस्टियोइड यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट, देन इट विल बी mineralized. अच्छा, when osteoblasts secrete the bony tissue, it becomes trapped inside the bony tissue and then will become flattened and will come into an inactive phase and become a resting osteocyte. Osteoblast जो है resting phase में osteocyte में convert हो जाता है and becomes a mature bone cell. The stain of what is the shape of the osteoblast? You can see it is cuboidal in shape and it has a spherical nucleus and it is centrally located. Cytoplasm इसकी जो है it is basophilic stain. Why it takes a basophilic stain? Because ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सिक्रीट करना, कोलेजन मैट्रिक्स फाइबर्स को सिक्रीट करना मैट्रिक्स में. कोलेजन फाइबर्स प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है and it takes any proteinaceous component has to be formed by rough endoplasmic reticulum. और rough endoplasmic reticulum जब ये सिक्रीट करेगा तो it takes a basophilic stain in the cytoplasm. तो ये basophilic stain लेगा. Now osteoblasts जो हैं ये in turn form होते हैं by osteoprogenitor cell. These are the stem cells. These stem cells are present in the periosteum and the endosteum which is lining the marrow cavities. Periosteum जो external surface of the bone को line कर रहा है और endosteum जो कि marrow cavity surface containing surface of the bone को line कर रहा है. So the stem cells are present in these surfaces and they, whenever there is need, will convert into osteoblasts to form and deposit the bone. So divisions की इसकी division से osteoblasts produce होते हैं and whenever osteoblast sees their function of producing the new bone tissue, it will then exist as the osteocyte. Okay, आपने एक टर्म सुना होगा बोन रिमॉडलिंग. बोन रिमॉडलिंग में जब भी बोन की शेप फॉर्म होती है तो कुछ जगहों पे बोन की डेपोजिशन होती है और कुछ जगहों से बोन की रिजॉर्प्शन होती है. यही जो मैकेनिज्म है हमें नज़र आता है ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट है ऑफ द टूथ में भी. जब हम मैल अलाइन टूथ को प्रॉपरली अलाइन करते हैं बाय मीन्स ऑफ द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, तो उसमें क्या होता है अलाइनमेंट टूथ की माइग्रेशन कैसे होती है ओरल कैविटी में? बाय इन सम एरियाज डिपोजिशन ऑफ द बोन, व्हेयरएज अगर उसकी मीजियल माइग्रेशन आप करवा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ अप्लायंसेस तो मीजियली जो है resorption होती है bone की. So that resorption of the bony tissue is done by osteoclast cells. ये कैसे cells हैं? ये multinucleated cells हैं that are probably derived from the bone marrow or monocytes which fuse together to form a multinucleated osteoclast. इनमें they are thought to have many nuclei, maybe some around 30 or more nuclei, and the diameter of the cell is ranging 50 to 150 micrometer in diameter. ठीक है, इनका diameter बहुत बड़ा होता है. Now, they lie in close association to those surfaces which are undergoing resorption. तो जिस बोनी सरफेस पर रिजॉर्प्शन होती है वहाँ पे ये क्लोजली अपोज्ड हो जाते हैं, क्लोजली अप्लाइड होते हैं एंड द सरफेस क्लोज टू दैट surface of the bone which is undergoing resorption is having a deep enfoldings of the plasma membrane. बाकी जो surface है osteoclast की वो smooth होगी, उस surface पे plasma lemma जो है deeply enfolded होगा and forms a ruffled border. इस border को कहते हैं ruffled border.
and the osteoclasts जो हैं they lie in shallow depressions in the bony cavity in the bone where resorption is going to take place. These depressions are called house-shaped lacunae. House-shaped lacunae या resorption bays. House-shaped lacunae या resorption bays. अच्छा, जहाँ पे ये जो डीप इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं, in these areas, these osteoclasts, they exhibit, they have their cytoplasm exhibit a foamy appearance. Foamy appearance इसलिए होती है because they have a huge number of vesicles and vacuoles, and these vacuoles are there because of the many number of enzymes containing vacuoles, and these enzymes contain for जो है ना hydrolases or enzymes which will then secrete hydrogen ions and hydrolases to secrete to resorb the bony tissue. Okay, they are also rich in mitochondrion, and they have many Golgi apparatuses. Why Golgi apparatus? Because they also have to envelop these vesicles. जब vesicles ज़्यादा होंगे तो Golgi complex भी rich होगा. Now we have two types of bony tissue. Spongy bone according to its histological appearance, bony tissue, spongy tissue and compact bone. ठीक है, spongy bone and compact bone या cancellous bone भी कहते हैं spongy bone को. लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो भी बोन होता है, there are basically two types of bones according to structure, lamellar bone and non-lamellar bone. ठीक है, तो हम जो adult bone डिस्कस करते हैं उसमें एडल्ट बोन लैमेलर बोन होता है. लैमेलर बोन वो बोन है जिसमें जो बोन है वो लेयर्स में डिपॉजिटेड होगा. सो स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन दोनों जो हैं लैमेलर बोन की दो वेराइटीज़ हैं, यानी इनमें जो बोनी टिश्यू है वो लेयर्स में अरेंज्ड है, बोन टिश्यू लेयर्स में अरेंज्ड है, यानी ये लेयर्स आपस में पैरेलल होते हैं. ठीक है, सो लेयर्स ऑफ बोन आर पैरेलल टू वन अनदर. अच्छा, हर लेयर जो बोन की है उसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे. इट हैज़ बोन मैट्रिक्स. अब बोन मैट्रिक्स किस चीज़ से बना हुआ है? बोन मैट्रिक्स में दो कंपोनेंट्स हैं. आई जस्ट वांट टू हैव अ रिड्यूस्ड पावर पॉइंट फॉर यू ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाए एंड इट शुड नॉट बी मच डिटेल्ड. तो दो चीज़ें हैं बोन मैट्रिक्स में. बोन मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट्स, one is organic, the other is inorganic. Organic and inorganic. The inorganic component is mineral component. ये जो आपको लेयर नजर आ रहे हैं इसमें inorganic component में mineral content है. तो dry weight of the bone जो है उसमें 65% mineral content होता है. Mainly calcium and phosphate are the minerals, but there are other minerals in trace amounts, yes, less important quantities. Sodium, magnesium, carbonate, citrate ये भी present है. कैल्शियम फॉस्फेट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं इन क्लोज रिलेशन टू दी कोलेजन फाइबर्स. ये जो लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं. नाउ बेसिकली मिनरल कंटेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बना रहा है. फिर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है दैट इज मेकिंग द 35% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बोन. ड्राई वेट ऑफ द बोन जब आपने वाटर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो 35% जो ड्राई वेट है बोन का उसमें 90% to 95% is the collagen fibers, यानी प्रोटीन कंपोनेंट. ठीक है, प्रोटीन कोलेजन से कोलेजन फाइबर्स बनते हैं और वो कोलेजन फाइबर्स किसी भी लेयर में पैरेलल होंगे. ठीक है, किसी एक लेयर में उनकी the collagen fibers have a direction parallel to one another. Then the remaining 5% is amorphous ground substance. The amorphous ground substance is basically chondroitin sulfate, just like cartilage, but it also has small amounts of keratin sulfate. अच्छा, लेयर्स बनती हैं. अब आपको एक चीज़ हो गई कि बोन टिश्यू लैमेलर होता है यानी लेयर्स में अरेंज्ड होता है. स्पॉन्जी जो बोन है इसमें जो लेयर्स होते हैं दे आर पैरेलल टू वन अनदर
but they are not concentric, यानी कि वो circular layer में arrange नहीं होते around one another. इसमें the bony tissue is in the form of trabeculae या small projections like spines, spicules. ठीक है, trabeculae या spicules के form में होता है bony tissue and it surrounds the marrow spaces which contain bone marrow. Red marrow spaces को surround करता है ये bone और इसमें जो है they have lamellar bone, but this lamellar bone does not contain Haversian canal system. Haversian canal system या osteons इसमें नहीं होते. Does not contain osteons. What is an osteon? You will understand properly in the compact bone. ये आपके पास cancellous bone है of a developing cancellous bone under study है, and this is how it will appear in the microscopic slide. We have such kind of a slide in the lab. So what you can see is that the pink eosinophilic appearing is the bony tissue which can be seen in the form of bony trabeculae. These bony trabeculae you can see are exhibiting because in this region it is going to develop into an osteon, but this is the area where it is going to surround the marrow spaces. So in these areas it is going to develop into lamellar bone, but this cancellous bone does not have osteons or very few osteons. आपको यहाँ पे basically parallel layers of bone नजर आएगा, ठीक है, and these are the marrow spaces which contain the developing red marrow. The same is this. Because bone जब form होता है तो remodeling होती है, you can see the horn-shaped lacunae, there are osteoclasts. Now, what are the different points? What are the key points of identification of cancellous bone? They are the bony matrix is in the form of trabeculae or spicules, mainly trabeculae, and it surrounds the hemopoietic yani bone marrow tissue. It contains the marrow spaces, and it has usually none to one or hardly any Haversian canal system. आप ये समझें कि none. There is no Haversian canal system or osteon present in a cancellous bone. Let's study the features of a compact bone. Now, these are the repetition of the things that I just mentioned to you. That there are two basic components of a bone matrix: mineral and और inorganic and organic. Inorganic जो है ये जो आपको यहाँ पे percentages दिए हुए हैं, this is actually the hydrated bony tissue. मैंने आपको जो percentages बताए थे, it is of a dry weight of the bone. 65% mineral content है dry weight of the bone और 35% organic content है. 65% जो है उसमें mainly calcium phosphate in the form of hydroxyapatite crystals, and whereas collagen जो है it is making the 90% of the organic component. ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे collagen deposited है, and these are the osteon systems which are typical of a compact bone. ठीक है, and hardness of a bone depends on its mineral salts. Okay, if you remove the organic component of the bone, for example by burning, what happens? An inorganic material of the bone is left behind, and the bony tissue will then remain as a white, brittle, and fragile mass, which can be easily fragile mass. ठीक है, जो कि original shape of the bone को तो retain करता है, but it breaks very easily when it is handled. Why? Because the organic content of the bone is also providing its toughness. अच्छा, अब अगर inorganic component of the bone को हटा दें, कैसे हटाएं? For example, prolonged immersion कर दें, अगर हम mineral acids में अगर हम उसको prolonged time के लिए immerse कर दें dilute mineral acids में, तो the mineral content of the bone is removed. What happens? The bone loses its rigidity, and then it will become so flexible, just like a tendon. ठीक है? Now this is the diagrammatic. This is the longitudinal section of a compact bone. Here we can see both the compact bone and the spongy bone, because this is the longitudinal section of a long bone. In a long bone, there are two main parts, epiphysis and
डायफिसिस, ठीक है। एपिफिसिस जो एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन है वहाँ पे तो इट इज कवर्ड बाय अ कोर ऑफ द स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय अ शेल ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। लेकिन ये आपको शैफ्ट नजर आ रहा है, तो शैफ्ट में होता है the beneath the periosteum there is the bulk of the compact bone, but just before the marrow cavity a thin layer of the spongy bone is covering the marrow space, ठीक है, marrow cavity, medullary cavity. So the inner surface of the shaft is lined by the spongy bone. ये spongy bone है जो कि marrow medullary cavity को cover कर रहा है. Now the compact bone, the longitudinal section of the compact bone appears as can be identified as long slits. The Haversian canal appear as long slits which are bordered by columns of the bony lamellae. ये आपको columns of bony lamellae नजर आ रहे हैं जो कि slit like spaces को cover कर रहे हैं, border कर रहे हैं. These slit like areas are the Haversian canals which bring the blood supply and communicate with the periosteal and the endosteal blood vessels. अब आपको यहाँ पे ऊपर ही अगर आप देखें तो दिस शोज द क्रॉस सेक्शन. इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द long bone, shaft of the long bone, it shows that it exhibits the osteons or the Haversian canal system. The center, the Haversian, they are in the cross section. The canal appear as round openings, which are surrounded by concentric lamellae. ये round opening जो है ये आपको Haversian canal दिखा रहा है, which is and it is bordered by concentric lamellae. It is cut by here over here, but these are the concentric lamellae which will surround one Haversian canal. The one Haversian canal, together with its osteocytes and the concentric lamellae, form a Haversian canal system or an osteon. Each Haversian canal is surrounded by varying number of the concentrically arranged bony lamellae, but they usually range from 5 to 20 in number, ठीक है. So it varies in number, but approximate जो इनका number है 5 to 20 हो सकता है around each Haversian canal. So this is called one osteon or one Haversian canal system. Then there is many such Haversian canals, and in between the Haversian canals there are interstitial lamellae, and towards the just beneath the periosteum there are outer circumferential lamellae. These are arranged, they are parallel to the external surface of the bone, and because of the circumferential arrangement this is called outer circumferential lamellae. सिमिलरली जो एंडोस्टियम के साथ अलाइंड होते हैं इनको इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले कहते हैं. एंड ईच ऑस्टियन इज सराउंडेड बाय अ सीमेंट लाइन व्हिच इज एन अनमिनरलाइज्ड जोन. ये आपको स्लाइड आपको ये वाली बनानी है. दिस हैज़ टू बी ड्रॉन इन योर नोटबुक्स. दिस इज द ड्राई ग्राउंड सेक्शन ऑफ द cross section of the ground compact bone, dry compact bone, and you can see different osteons here, circumferential lamellae, and these are the interstitial lamellae. Okay, the different osteons, they are connected by Workman canals. ठीक है, these Workman canals may also connect with the endosteal blood vessel with the endosteal blood vessels and periosteal. ये आपको नजर आ रहे हैं Workman canals. Okay, each osteocyte, this is the osteocyte present in the lacunae here, and you can see the protoplasmic processes are also extending to contact with the protoplasmic processes of the other osteocytes. But when they extend, the lacunae also connect with one another. These channels are called canaliculi. These channels are called canaliculi. तो ये जो हैं आप इनको कह सकते हैं कि इनके hair like processes हैं, and they are present जैसे कि lacunae में present होते हैं osteocytes, इसी तरह इनके cytoplasmic processes जो हैं canaliculi में present होते हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेमेले बोन के लेयर्स नहीं नज़र आ रहे, इनके बीच में जो थ्रेड लाइक फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ये आर एक्चुअली कैनेलिकुलाई हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑस्टियोसाइट्स को
एक दूसरे के साथ. The osteocyte in the innermost layer of the osteon is connected to the Haversian canal, whereas rest of the osteocytes are interconnected. So this is how the osteocytes of the peripheral layer will derive their nutrition from the Haversian canal. Haversian canal की जो blood vessels हैं उसमें से nutrition जो है इस तरह से pass होती है because all the osteocytes are connected to one another by their cytoplasmic processes present in the canaliculi. ये longitudinal section है. This is the cross section, and this is a high magnification, the one osteon under a high power. So what are the key points of identification of the compact bone is the characteristic lamellae of the bone matrix. They can see a characteristic concentric arrangement of the bony layers. यहाँ पे concentric add कर दीजिएगा. Haversian and the Workman canals can be seen, and osteocytes they are present in lacunae, whereas the Haversian canal systems are seen. तो आपके जो typical हैं concentric bony layers की arrangement है. Second इसमें Workman canals हैं. Third और Haversian canals हैं जो आपको rounded नजर आए थे, and third ये कि Haversian canals भी नजर आते हैं. Osteocytes आपको खैर दोनों ही bony tissues में नजर आएंगे. Thank you.